Hello everyone. Today I'm going to start on the topic that is thermal pollution. So what is thermal pollution? Thermal pollution is the degradation of water quality by any process that changes ambient water temperature, sometimes called thermal enrichment. Thermal pollution is the rise or fall in temperature of natural body of water caused by the human influence. मीन्स जो पानी का टेम्परेचर है हमारा वो चेंज होगा. The sudden change in temperature decrease oxygen supply and affect the ecosystem. Due to change in temperature, जो हमारी ऑक्सीजन है पानी की वो भी कम हो जाएगी and it will disturb our ecosystem. Sources of thermal pollution. Water as a coolant agent in power and manufacturing and industrial plants. Nuclear power plants, coal-fired power plants, hydroelectric power, domestic sewage, urban runoff. These are the sources of thermal water pollution. Or you can say thermal pollution. जो पानी के टेम्परेचर को राइज करने में ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. इनकी वजह से जो पानी में पानी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है एंड जो वहाँ के एक्वेटिक लाइफ है, एनिमल्स हैं, उनके लिए वो बहुत हार्मफुल हो जाता है. वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है. तो नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एज अ कूलिंग एजेंट इन पावर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स. तो वाटर बॉडीज जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग या पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं वहाँ पर जो वाटर बॉडी है वहाँ का पानी लेंगे और एज अ कूलिंग एजेंट यूज करेंगे और उसमें हॉट वाटर डिस्चार्ज करेंगे जिससे कि जो पानी वहाँ का टेम्परेचर है वो राइज हो जाए और जो वहाँ पे जो एनिमल्स लिव कर रहे हैं, प्लांट्स हैं और भी जो भी वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता. Production and manufacturing plants are the biggest source of thermal pollution. Productioning and manufacturing plants जो हमारे हैं that is the biggest source of thermal pollution. These plants draw water nearby source to keep machine cools and then release it back to the source at higher temperature. ये पानी लेंगे नजदीक से सोर्स जो भी पास में सोर्स होगा या वाटर बॉडी होगी अपनी मशीन को कूल करने के लिए फिर वो रिलीज करेंगे उसी सोर्स में हायर टेम्परेचर. व्हेन heated water return to river or ocean the water temperature rises sharply. Nuclear power plants, they discharge a lot of utilized heat and trapped radionuclides into nearby water streams. Emission from nuclear reactor and processing instrument are also responsible for increasing the temperature of water body. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हमारा जो है वो थर्मल पोल्यूशन कॉज करते हैं. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या करेंगे वो वाटर लेंगे नियर बाय वाटर जो भी पानी वहाँ का सोर्स है वहाँ से पानी लेंगे यूज करेंगे और जब वो रिलीज करेंगे वो हीटेड हीट भी होगी उसमें और वो रेडियो एक्टिव भी होगा थोड़ा स्लाइटली. उसका टेम्परेचर काफी हाई भी होगा और वहाँ के एनिमल्स के लिए एक्वेटिक लाइफ के लिए that is not good. Heated effluents from power plants are discharged at 10 degrees higher than coolant receptor and affect the flora and fauna of that ecosystem. Coal-fired power plants. Now we are coming on the topic that is coal-fired power plants. Thermoelectric power plants uses coal as a fuel and are usually built next to the bodies of water in order to have a steady supply of water necessary for their production. The water being used by these power plants is converted to steam in order to drive turbines for electricity generation. These plants discharge the hot water back to the receptor water body and thereby increases the temperature of water body. So coal-fired power plants are also responsible for the thermal pollution. सोर्स है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स.
Even though hydroelectric power is a renewable source of energy, it does still have some disadvantage. One is the thermal, that they cause thermal pollution. The turning of steam heater turbines increase the temperature of water as they move continuously within the streams. With that, the thermal pollution is caused. Although hydroइलेक्ट्रिक जो पावर्स है that is a renewable source of energy, उसमें कोई कोल बाकी चीज यूज नहीं हो रही है, बट स्टीम हीटेड टरबाइन्स को रन करने के लिए टेम्परेचर पानी का इंक्रीज हो जाता है, और जब वो पानी को छोड़ते हैं तो वो पानी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, एंड दिस लीड्स टू थर्मल पॉल्यूशन. Now we have domestic sewage. Domestic sewage is often discharged into rivers, lakes, canals, or streams without treating the waste. The temperature of municipal water sewage is normally higher than receiving water. With the increase in temperature of the receiving water, the dissolved oxygen decreases and the demand for oxygen increases, cause anaerobic conditions. डोमेस्टिक सीवेज भी जब डिस्चार्ज होता है रिवर में, कैनल में या स्ट्रीम्स में विदाउट ट्रीटिंग, देन जो उसका टेम्परेचर है पानी में थोड़ा हाई, स्लाइटली हायर होगा, ज़्यादा नहीं होगा बट थोड़ा हायर होगा. ऑक्सीजन लेवल को वो कम कर देगा और वहाँ की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज कर देगा, एंड एनारोबिक कंडीशन प्रिवेल कर देगा उस एरिया में. Urban runoff, that is another example of thermal pollution. Urban runoff discharged into surface water from paved surfaces like roads, parking lots can make the water warmer. During summer season, the pavement gets quite hot, which create warm runoff that gets into sewer system and water bodies, and this leads to rise in temperature of the water body. Now, what are the effects of the thermal pollution? First is it decreases the dissolved oxygen level in that water body. The warm temperature reduces the level of dissolved oxygen in water. The warm water holds relatively less oxygen than cold water due to it being incapable. The decrease in dissolved oxygen can create suffocation for plants, animals, fishes, amphibians, copepods, and many other organisms. And this will give rise to the anaerobic condition. Warmer water allows algae to flourish on the surface of water, and over the long term, growing algae can decrease oxygen level in water. तो जैसे ही टेम्परेचर हमारा राइज करेगा, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है पानी में वो कम हो जाएगा, उसका लेवल कम हो जाएगा, और जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी. Increase in toxins. With the constant flow of high temperature discharge from industries, there's a huge increase in toxins that are being dumped into natural body of water. These toxins contain chemicals or radiations that may have a harsh impact on local ecology and make them susceptible to various diseases. Nuclear power plants can also release slightly radioactive cooling water, which is also toxic to living beings. The chemicals may have a range of toxic effect on plants, animals, which cause fatal poisoning or lead to mutation and sterilization. विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हमारे टॉक्सिन भी इंक्रीज हो जाते हैं, जो टॉक्सिन है वो रिएक्ट करने लग जाते हैं आपस में और ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म क्रिएट कर देते हैं. और इसमें ये भी है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जब वो पानी रिलीज करते हैं तो थर्मल पोल्यूशन तो कॉज करते ही हैं, और वो जो पानी रिलीज करते हैं वो स्लाइटली रेडियो एक्टिव होता है. उससे क्या होता है, टॉक्सिन से और इन रेडियो एक्टिविटीज से जो वहाँ के एनिमल्स हैं, एक्वेटिक जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और वहाँ पे पॉइजनिंग हो जाएगी या फिर म्यूटेशन आ जाएगा जो वहाँ स्पीसीज रह रहे हैं, या फिर वो स्टरलाइज रह जाएंगे, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेल हो जाएंगे and they will not be able to survive. Loss of biodiversity.
Due to change in the environment may cause certain species of organisms to shift their habitat to some other place, while there could be a significant number of species that may shift in because of warmer water. Organisms that can adapt easily may have advantage over organisms then that are not used to the warmer temperature. Change in temperature can kill off vulnerable, endangered or threatened organisms which leads to extinction of species. It means that जैसे ही हमारा थर्मल पॉल्यूशन कॉज हुआ, पानी का टेम्परेचर राइज हुआ, एनवायरमेंट चेंज हो गया, तो जो स्पीसीज वहां पे रह रही हैं, जिन्होंने अडेप्ट कर लिया वो सरवाइव कर लेंगे, जो नहीं अडेप्ट कर पाए उस टेम्परेचर को दे विल डाई और उनमें कुछ म्यूटेशंस आ जाएगी. Organisms that adapt easily may have advantage over other organisms that are not able to adapt in the warmer temperature. तो जो नहीं अडाप्ट कर पाएंगे वो मरने स्टार्ट हो जाएंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे, एंडेंजर्ड हो जाएंगे और अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. And this leads to loss of biodiversity. Now, ecological impact. A sudden thermal shock can result in mass killing of fish, insects, pests, plants, amphibians. Hotter water may prove favorable for some species, while it could be lethal for other species. Small water temperature increase the level of activity, while higher temperature decrease the level of activity. Many aquatic species are sensitive to small temperature changes, such as 1 degree Celsius, that can cause significant change in organism metabolism and other adverse cellular biological effect. कई बार इकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट, हमारा जो ओवरऑल इम्पैक्ट है उससे क्या है कि सडन अगर चेंज हो जाए एनवायरनमेंट में, सडनली मास किलिंग हो जाती है, मास किलिंग ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दैट एरिया, और उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी या मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, तो ये इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी लाइफ पे थर्मल पॉल्यूशन से. नाउ द डिफेक्ट इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. A significant halt in the reproduction of marine wildlife. Although this may be true, reproduction can still occur between fish, but the likelihood of defect in newborn is significantly higher. Can happen due to increasing temperature, as reproduction can happen within a certain range of temperature. Excessive temperature can cause release of immature eggs or can prevent the normal development. Due to rise in temperature, क्या होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो रिप्रोडक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, दे रिप्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज, एंड इफ इट चेंजेस तो डेवलपमेंट में फर्क तो आएगा ही. नाउ नेक्स्ट, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट. ड्यू टू थर्मल पॉल्यूशन जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा. मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो फूड डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. फूड डिमांड इंक्रीज होगी तो दिस विल लीड टू डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ द फूड चेन और द बैलेंस ऑफ द स्पीसीज कंपोजिशन. माइग्रेशन वहां से जो स्पीसीज है वहां पे नहीं सरवाइव कर रही है, सो दे विल ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम दैट प्लेस, एंड वो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी करेगी, माइग्रेट हो जाएंगे वहां पे. इन्वेजन ऑफ डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिजम्स. इन्वेजन थर्मल पोल्यूशन से क्या हो जाएगा, जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और इन्वेजिव स्पीसीज, जो स्पीसीज अडेप्ट कर रही है बट वो उस एनवायरनमेंट के नहीं है, वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहाँ के जो नेटिव है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट इन्वेजिव स्पीसीज. Here be an example of invasion of shipworm into New Jersey's oyster creek. Algal growth बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और हमारी invasion of destructive organisms. So अगर algal growth ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो organisms होंगे जो लोअर लेवल पे होंगे, अपर लेवल पे algal growth आ जाएगी तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे. And the next, we have control measures for the thermal pollution. What control measures we can take for to control this thermal pollution? Cooling pads. Cooling pads or reservoirs are the simplest method of controlling thermal discharge.
In cooling ponds, heated effluents on the surface of water maximize the dissipation of heat into the atmosphere and minimize the area and volume of the water. तो कूलिंग पॉन्ड्स बना सकते हैं, कूलिंग पॉन्ड्स और रिजर्वोयर बना सकते हैं. That is the simplest method of cooling thermal discharge. Before discharging into the main stream, we should cool it. Cooling towers are mainly used to dissipate the recovered waste heat to eliminate the problem of thermal pollution. After using water from water source for cooling purpose, it is subsequently returned to water body after passing through the condenser, which is termed as cooling process. Therefore, cooling towers are designed to control the temperature of water to make the cooling process more effective. We can use the cooling towers that will dissipate the recovered waste heat to eliminate the problem of thermal pollution. Next is the artificial lake. Artificial lake are man-made water bodies that offer a possible alternative. The heated effluent may be discharged into the lake at one end and the water may be withdrawn from the other end for the cooling purpose. The heat is eventually dissipated through evaporation. However, these lakes have to be rejuvenated continuously. तो हम आर्टिफिशियल लेक बना सकते हैं. एक साइड से हम हॉट वाटर वहां से डिस्चार्ज करेंगे, दूसरी साइड से उसका टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हमें अवेलेबल होगा एंड देन हम उसको मेन स्ट्रीम में वहां पे डिस्चार्ज कर सकें सो दैट वहां पे थर्मल पोल्यूशन कॉज ना हो. नेक्स्ट इज वाटर रिसाइकलिंग. Industrially treated water can be recycled for domestic use or industrial heating that the problem of thermal pollution can be mitigated. हमें बिफोर रिलीजिंग हमें पानी को रिसाइकिल कर लेना चाहिए और इंडस्ट्रियली ट्रीटेड वाटर कैन बी डोमेस्टिक यूज या इंडस्ट्रियल हीटिंग के लिए फिर से उसको यूज कर सकते हैं. इस वजह से हम उस पानी को डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो वाटर पोल्यूशन भी नहीं होगा और हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो भी रन कर रहेगी साथ बाई साथ पैरेलली में, तो डिस्टर्ब भी नहीं करेगी. अदर एप्लीकेशंस हम क्या यूज कर सकते हैं? द थर्मल डिस्चार्ज or the rejected heat of power plant can be used for other purposes like industrial and space heating, biological applications such as soil warming, fish culture, livestock shelter and heating greenhouses. इन purposes के लिए हम thermal जो hot पानी है, thermal water है, we can use it that और thermal pollution नहीं होगा. फिर इस वजह से हमारा thermal pollution cause नहीं होगा. ये एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं या ये रिसाइकल कर सकते हैं. So thank you. That's all for the day.